welcome to SLD online class 7th standard general science. In today's video I am going to explain you the chapter 9 that is a heat. We are going to learn about heat. आज के वीडियो में आपको चैप्टर 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ. वो चैप्टर हीट के बारे में है. अभी हम जैसे कोई भी हीट चीज करेंगे, कैसे हीट होगा, कैसे बॉईल होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. We come to know some properties of heat energy from the example in the picture and the above activity. The sun heat has many effects and uses. How does the solar heat reaches the earth? Why does the heat in the water heated to boil slowly decreases once it is taken out from the flame? Where does this heat go? The moisture in the air cools down due to the ice cube in a glass and collects on the outside of the glass. A thermometer is used to measure the temperature of the substance. We have already studied the changes in the state of matter caused by heat. What happened here in the picture? We can see how it is getting heat. If we are boiling anything, it is heated. If from the sun heat also we will get the heat from the sunlight, and from solar energy. From sun only we are getting the solar energy. If the water is boiling, slowly it decreases. If anything, we will keep on boil. If it will be on heat, it will get boiled, and the level of that it will decrease. Where does all these are going? The moisture in the air also cools down due to the ice cube in the glass and collect on the outside of the glass. The moisture, when we are kept anything in a fridge and we will take it out from the freezer and we will keep it out, what happens? All that the ice cube will melt, and outside the glass the moisture will be collected. So we already studied the changes in the state of matter caused by the heat. The changes that is causing the state of matter, it is caused by because of the heat. Heat के वजह से वहाँ पे changes cause होता है. अभी हम ऊपर के पिक्चर्स देख के क्या बता सकते हैं? अभी हीट होता है, कोई भी चीज़ हम हीट करते हैं, या अभी सी में या फिर कहीं भी हीट के वजह, सनलाइट के हीट के वजह से कोई सब पानी इवेपोरेट हो जाता है, मॉइस्चर में वो कलेक्ट हो जाता है. तो एयर क्या होता है? कूल हो जाता है. मॉइस्चर रात में क्या होता है? एयर कूल हो जाता है. हम प्रीवियस लेसन में पढ़े थे. नाउ ट्रांसफर ऑफ हीट. हाउ द हीट इज ट्रांसफर? When we take a hot object in a vicinity of a cold one, the cold object become warm and the hot one become cooler. From this we can infer that the heat is transferred from a hot body to a cold body. What happens? What is the transfer? When we take a hot object and a cold object, what happened? The cool object will become warm and the hot object will become cool. So from this we can come to know that the transfer of the body temperature, the hot body to the cool body, heat is also transferring. अभी हम क्या करेंगे? फ्रिज से पानी निकालेंगे और हॉट वाटर, बॉयल वाटर बाहर रखेंगे, दोनों पास में ही रखेंगे. थोड़ी देर के बाद क्या होता है? जो कोल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा वो हॉट हो जाएगा और जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो कोल्ड में चला जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है? हीट ट्रांसफर हो रहा है. मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. हाउ द हीट ट्रांसफर? कंडेंसेशन, कन्वेंसेशन एंड रेडिएशन. See what are the instrument we are taking? Brass of the stainless steel, aluminium and a copper, a candle, a burner pin. Here they have taken, see, they have taken a brass of the stainless steel and the aluminium they have taken. After that they have taken a copper candle, they have burned the candle, and a burner and a pin. How to do the experiment? Take a stainless steel or a iron, copper and aluminium bar, each about 30 centimeter long and having the same shape. Apply wax spot with the help of a candle
at the distance of 2 centimeter from each of all the 3 bars. Stick a pin in each of these spots so that it is upright. Now insert the end of the all 3 bars into the flame at the same time. Observe for a while. You are going to take a स्टेनलेस स्टील और आयरन एंड अ कॉपर एल्यूमिनियम बार. ये तीनों चीज आपको लेना है और तीनों का लॉन्ग लेंथ कितना रहेगा 30 सेंटीमीटर रहना चाहिए और हैविंग द सेम शेप और साइज जो रहना चाहिए सेम रहना चाहिए. और उसमें वैक्स आप अप्लाई करोगे, जो कैंडल का वैक्स आता है ना वो अप्लाई करोगे. अप्लाई करने के बाद एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर ऑन द 3 bars you will give the 2 centimeter gap for all that and you are going to put a pin on that. तीनों जो वैक्स आप लगाए हो स्टेनलेस स्टील पर उस पर आप पिन लगाओगे. पिन लगाने के बाद आप उसको फ्लेम पे रखोगे. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू वॉच फॉर अ व्हाइल. व्हाट विल हैपन? The pin falls starting from the end near the burner. It becomes that transfer of heat take place from the hot end of a bar to the cold end. That this transfer of the heat from the hot part of the object to the cool part is called condensation of the heat. What happens when you are burning? The heat, what that the heat what does the pin will do? The pin will fall starting from the end near the burner. बर्नर का जो स्टार्टिंग एंड है वहां से पिन क्या होगा वो गिरने लगेगा. तो यहाँ पे हमें क्या मालूम पड़ता है? कंडेंसेशन होता है क्योंकि वो एक एंड हॉट एंड से लेके कोल्ड एंड तक वो हीट ट्रांसफर हो रहा है. तो इससे हमें मालूम पड़ता है कंडेंसेशन टेक प्लेस होता है. The pin on the copper bar start falling first. Their pin on the steel bar fall comparatively later. The heat is conducted quietly through copper. Condensation of heat through a substance depend on the properties of that substance. The conduction of heat take place through the soil substance shows that a medium is required for the conductor of heat. What happened conductor here? Copper is a good conductor of heat. We know in 6th standard we have learned that the copper is a good conductor of heat. So the pin here you can see the pin the pin near the aluminium first it will fall. After that near the copper it will fall later. So from this we can come to know the heat is a good conductor of the heat. अभी हमें ये एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ता है कि हीट जो है कंडक्टर है, कंडक्शन ऑफ हीट है, वो गुड कंडक्शन ऑफ हीट. क्योंकि जब पिन जो है कॉपर बार के पास है वो फॉल हो जाएगा पहले, उसके बाद जो है पिन ऑन द कॉपर बार स्टार्ट फॉलिंग फर्स्ट. आफ्टर दैट नियर द स्टील बार, सॉरी एल्यूमिनियम बार जो है उसके पास नहीं है पिन, कॉपर बार के पास है. कॉपर बार के पास से जो पिन है पहले गिरेगा, उसके बाद जो स्टील बार के पास रहता है वहाँ वो गिरेगा पिन. आफ्टर दैट comparatively it will fall later. Now, how does the transfer of heat take place through liquid? Liquid के पास कैसे transfer of heat take place होता है? Then here also we are going to take a beaker, platinum paramagnetate crystal, a burner and water. Procedure: take some water in a beaker, heat the beaker slowly on a gas bar, drop a few crystals of potassium paramagnetate in the water. Now watch the water in the beaker carefully. What do you see? You are going to take a beaker and a potassium paramagnetate crystal and a burner and a water. After that, you are going to take a water in a beaker. You are going to heat the beaker slowly on a gas burner. After that, you are going to drop a potassium paramagnetate into the water. Now you will watch it. What will happen? See here in the picture they have shown. They have taken the potassium paramagnetate. First they took the water
and in a beaker. After that, they kept the water on the burner to heat it slowly. After heating it slowly, he had put the potassium permanganatate. Now you are going to watch what will happen. You will see the steam of the water going upwards. What? Here the steam of water, when we add the potassium permanganatate and you will boil the water, the steam will go upward and coming down to the bottom. It will go up and will come back again to the bottom. Due to the potassium permanganatate, these magneta color steam can be identified easily. When heating, being the water near the bottom becomes warm and its density decreases. As a result, it moves upward and it's replaced by cool water coming from above. In this manner, heat is transferred by the means of currents called convection current. This process is called the convection of heat. From this, what happen in here, you can see when the water is boiling, the permanganatate, what will it will do? From the bottom only full water will boil. From low water will boil and then the higher water will boil. When it will boil, what happen? The bubbles will go up and the cool bubbles will come down. From this whole the water is getting boiled. So from this experiment we can come to know convection of heat will take place. And by putting the magnetate, we can see the color is changing. From this we can come to know that is the convection of heat is occur. Convection can occur in a liquid and gaseous substance. Convection needs a medium. कन्वेंशन को क्या चाहिए? कन्वेंशन जो है लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस दोनों में अकर होता है, लेकिन उसको मीडियम चाहिए. अभी हम लोग यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट में लिए हैं? ग्लास बीकर लिए, वाटर बीकर लिए हैं, उसमें वाटर फिल किए हैं. वाटर फिल करने के बाद गैस पर स्टोव पे रखे बॉईल होने के लिए. तो उसके बाद थोड़े देर के बाद वो थोड़ा सा पोटेशियम पेरामैग्नेटेड ड्रॉप क्रिस्टल ऐड किए. ऐड करने के बाद जो वाटर स्टीम है वो बॉईल होगा, तो पहले अप जाएगा, उसके बाद फिर से डाउन आएगा. तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो वाटर वार्मिंग हीट क्या होता है? वार्म होता है और बॉटम से एंड बिकम वार्म एंड डेंसिटी डिक्रीजेस. वाटर वार्म हो जाता है और वाटर का डेंसिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. तो इससे क्या मालूम पड़ता है? जो मूवमेंट है अपवर्ड एंड इट कूल रिप्लेस बाय कूल वाटर. जो वाटर वार्म वाटर है यहाँ पे क्या हो रहा है? कूल हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है कूल वाटर से. तो पूरा वाटर बाद में थोड़े देर के बाद वो हीट पूरा वार्म हो जाता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन सा हीट? कन्वेंशन करंट को यूज कर रहा है. तो इससे हमें मालूम पड़ता है हीट कन्वेंशन ऑफ हीट भी टेक प्लेस होता है. Now we are going to read about the reaction between the density and a convection. Now we are going to read about the relation between the density and the convection. यहाँ पे relation density और convection के बीच क्या है वो हम पढ़ेंगे. So the instrument that we need, a test tube, a piece of ice, wire, grass and a burner and a candle, etc. We are going to take a test tube, piece of ice, wire and a burner and a candle. After that, what is the procedure we had to do? Take some water in a test tube, wax a piece of ice in the wire grass and drop it in the test tube. It will sink to the bottom. Now, using a test tube holder, hold the test tube at the slat as shown in the figure. Heat the upper part of the test tube. Stop heating when the water starts boiling. Observe the piece of ice at the bottom. The heat does not reaches the bottom even though the upper part is heated. How does this happen? The density of water decreases due to the heating. Therefore, it cannot sink as the process of convection does not occur. See what they have taken. They have taken in a picture in the figure. You can see they have taken a burner and ice
wrapped in a wire. They have folded the ice cube in a wire and they have put into the beaker, and they have put a water, and they are going to hold the test tube by a test tube holder. After that, they have boiling the water from the upward. The water is boiling upward and the water is not boiling downward. The down, it is not getting heat. So here the density of water is increasing, but therefore the water that is sink, that it cannot sink and process the convention does not occur. The water of the density is decreasing due to the heat. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आप ऊपर बॉईल हो रहा है पानी, लेकिन उसका वाटर का डेंसिटी क्या हो रहा है, अपर वो बॉईल हो रहा है, नीचे तक वो बॉटम तक हीट नहीं पहुंच रहा है. तो यहाँ पे डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है हीट करने पर, लेकिन जो कन्वेंशन है वहाँ पे जो सिंक हुआ है, जो चीज, जो आइस क्यूब सिंक हुआ है, उसमें वो कन्वेंशन नहीं अकर हो रहा है, क्योंकि वहां तक वाटर का हीट नहीं पहुंच रहा है. नाउ अनदर थिंग, another example, what is a radiation? We are going to read about the radiation. Light a candle and hand it up, right? Hold your hand on its two sides at same distance from the candle. Bring them closer. What do you feel? You are going to light the candle and hand it up, right? And after that, fold your hand off on its two sides at the same distance from the candle. Bring it to the closer. What you will feel? Have you warmed yourself near a bonfire or a morning sun in a winter? The sun is millions of kilometers away from you. There is no air between the sun and the earth, and earth's atmosphere is only a thin layer of air close to the earth. Then how does the heat of the sun reaches us? The heat is transferred in the absence of many medium. The transfer of medium that take place in this way without a medium is called the radiation. In the two example above, heat reaches us mainly by a radiation. See, in a summer in a village, you can see they will burn a cow dung and they will take or wood, all that, and they will take in a winter season they will take a half of that. They will, after for example, if you want to feel the heat, you are going to burn a candle. When you will burn the candle and you will take your both the hand near that, you will get the heat. This happen because of the radiation. And the sun is very far. It is million kilometer far from the earth. Sun क्या है, अर्थ से मिलियन किलोमीटर से फार है, लेकिन अर्थ का टेम्परेचर कैसे हीट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक मीडियम रहता है. वो मीडियम के बहुत सारे मीडियम रहता है, वो मीडियम एब्सेंस पर वो हीट जो होता है ट्रांसफर हो जाता है, तो इससे अर्थ जो है हीट होता है. तो ऐसे ही उसको रेडिएशन बोलते हैं. कोई ऐसा रेडिएशन के वजह से अर्थ हीट होता है. और हमें कोई भी, अभी हम जला के आग के पास हाथ उठ करेंगे तो हमें रेडिएशन की वजह से हमारा हाथ थोड़ा हल्का गर्म होता, वार्म हो जाता है. Wondrous science. Radiation of a heat take place from many objects in nature such as trees, mountains, stones and road. A camera has been developed which uses this radiation to make our surrounding visible at night. It is called as an infrared camera. Using the camera, it is possible to keep a watch on the movement of the enemy during the night. What happened? What is a radiation? Radiation of heat take place from many objects in a nature like trees, mountains, stone, road. Radiation क्या होता है, कहीं वो हीट है ये, वो कहीं से भी प्लेस लेता है, जैसे ट्रीज हुआ, माउंटेन्स हुआ, स्टोन हुआ और रोड हुआ. कैमरा हैज ऑल्सो हैव डेवलप यूजिंग द कैमरा जो है वो भी रेडिएशन से डेवलप हुआ है. उसके सराउंडिंग में विजिबल एट नाइट, जो रेडिएशन ऐसा बना है जो नाइट में विजिबल हो सकता है.
और इंफ्रारेड कैमरा जो है उससे हम नाइट में विजिबल कोई भी चीज जो इनविजिबल है उसको विजिबल देख सकते हैं. यूजिंग दिस कैमरा इट इज पॉसिबल टू कीप ऑन वॉचिंग अ मूवमेंट ऑफ द एनिमीज ड्यूरिंग द. तो इससे क्या होता है, जो एनिमीज मूवमेंट ले रहे हैं हमारे आसपास, इससे हमें मालूम पड़ता है. When a heat ray falls on an object, a part of a heat is absorbed by the object and a part of it is reflected. The ability of a substance to absorb heat radiation depends on its color and also its intrinsic properties. What happens when a heat ray fall on the object, the part of the object is observed to be and observed by the object but a part of it is reflected. क्या होता है, जब रे जो है हीट का रे फॉल होता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्व क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व होता है, लेकिन उसका जो पार्ट है रिफ्लेक्ट भी हुआ है. जो एबिलिटी जो है सब्सटेंस का जो ऑब्जर्व करता है हीट को, वो रेडिएशन ऊपर डिपेंड होता है और उसके कलर के ऊपर. तो उसका वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं. Here I complete my half of the explanation of this chapter. In my next video I am going to continue the explanation.